Good morning, everyone. Okay, so you all can hear me, right? I think some time it's getting out of the conference and again it's getting real loud. I don't know, maybe because of internet connectivity. Anyways, जब तक ठीक चल रहा है तब तक चलेंगे. Where were we like yesterday? We were discussing something. We had an overview of DNA replication, the transcription and the translation. These two processes, the transcription and translation, were the part processes of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप्स थे, मेजर प्रोसेस थे, जिसमें एक ट्रांसक्रिप्शन था और एक ट्रांसलेशन था. ट्रांसक्रिप्शन में यू from the DNA and from RNA when it is amino acid sequence is manufactured or synthesized, we call it as translation. Okay, and then I said to study these two processes in that means we need processes in different sets of cells, that is prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes in so the transcription and translation is simultaneously one after the other. They keep on occurring, happening inside the cell cytoplasm. So we call it as coupled transcription translation of protein synthesis. But in eukaryotes, it's a bit different because the genetic material is being encrypted. That's why the process becomes compartmentalized. First, and the translation occurs in the cytoplasm. For that, the RNA that has been synthesized out of a DNA molecule will be transported out of that nuclear compartment. That's why we call that compartmentalized transcription and translation protein synthesis in eukaryotes. Okay. And there is another process which we need to study, that is the replication of genetic material. Because when it is transferred from one generation to another generation, the pre-existing cell to the few terms which come up. That is one thing is conserved, and another is consensus. So we confront these consensus sequences. The sequences which are called as conserved, that means the DNA molecule with the nucleotides are there, the base pairs, by which we call it as on denoting the one nucleotide or one base pair or one nitrogen base which is attached. One nitrogen base is termed as a base. So as it is, DNA is double stranded, so we have pairing of that. Two major types of nitrogen bases exist. They are purines and pyrimidines. And the purines are, PUAG, P-U-A-G. We used to remember in our school days like that. PUAG, P-U-A-G. That means adenine and guanine are purines. Okay, so rest of the cytosine and thymine are pyrimidines. So there is always a matching or the compatibility of one purine and one pyrimidine. So it was long back, it was experimentally told, and they said the total content of purine is always equal to the total content of pyrimidine. You need to recall that particular scientist's name who has given this, this theory. So
आप लोग याद करने की कोशिश करिए कि किसने ऐसे कहा था, कोई बता सकता है अभी? जो प्यूरिन से pyrimidines जो है वो हमेशा इक्वल क्वांटिटी में रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हर डीएनए मॉलिक्यूल का एक प्यूरिन एक दूसरे pyrimidine से ही AT है ना, तो या फिर CG, एक प्यूरिन एक pyrimidine से अपने आप को मैच करता है या फिर एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ पेयर। तो ये जो पेयरिंग है हमेशा एक प्यूरिन और एक pyrimidine के बीच में होती है, इसीलिए जो क्वांटिटी है प्यूरिन्स की वो इक्वल मिलेंगी आपको pyrimidines के। So the experiment was done like that. The purines and pyrimidines were estimated in a cell, and it was found to be equivalent. So why? Because of this reason, they are always found equivalent in the cell extracts. Okay. तो मुझे बताइए, कोई किसी को याद है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किया था? शागाफ, राइट, गुड। अब उसके बाद एक और चीज है। अब जब डीएनए के बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया, दो उनके बारे में हमें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम था, समथिंग इज देयर इन द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के थ्रू ये कंटेंट को इन्होंने देखा कि कैसे ट्रांसफर होता है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस न्यूक्लिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन, वन सेल टू another daughter cell. So in due course of understanding this, they have, they have come to many inferences, many conclusions by which they could know what exactly this nucleic acid, the content of nucleus, has got its characteristics. So उसमें उन्होंने एक चीज देखी कि एक तो ये था कि प्यूरिन्स और pyrimidines एक जैसे क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं if the cell extract has been estimated or tested. सो उसके अलावा एक और चीज थी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको हमने पहले पता लगा लिया शुरुआती तौर पे कि ये जो मॉलिक्यूल है, किसी डीएनए मॉलिक्यूल को मान लीजिए हम नाइट्रोजन बेसेस जो भी pyrimidines और प्यूरिन्स हैं उसमें से किसी एक मॉलिक्यूल को हम डोप कर दें। डोप करना मीन्स उसको रेडियो एक्टिव बनाना, किसी और चीज से सेम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या एलिमेंट या फिर कंपाउंड को हम किसी और तरीके से किसी और के साथ हम उसको अटैच कर देते हैं तो हम उसको डोपिंग कहते हैं। दैट कैन बी हमें किसी फ्लोरोसेंट डाई के साथ भी डोप कर सकते हैं, बट वी डोंट कॉल एज किसी डाई के साथ करने पर हम डोप नहीं कहते, उसको टैगिंग बोलते हैं। फ्लैगिंग, टैगिंग अलग अलग टर्म्स हैं, बट डोपिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस मॉलिक्यूल को या जिस एलिमेंट को, जिस कंपाउंड को, जिस पोर्शन को हम डोप करते हैं तो वी रिप्लेस दैट मॉलिक्यूल और एलिमेंट विद अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूजुअली क्या होता है, उसका एक डिके पीरियड होता है, कुछ समय बाद वो हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये हम रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके हिसाब से। तो कुछ लोगों ने डोपिंग की, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज किया और देखा कि एक जब न्यूक्लिक मटेरियल या फिर एक डीएनए मॉलिक्यूल जब दूसरे नए सेल्स में जाता है तो क्या ऑल टुगेदर नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का ही कोई पोर्शन उनके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। एंड देन दे हैड कम टू नो, नो, it's always been like that. The original DNA molecule is divided into two different molecules, and those two different molecules now synthesize new molecules to get into the new cells. Okay. One sec, one sec. So that way it was found. Hello. So that way it was found. These molecules usually make themselves conserved in future generations. That means the content of DNA which was there in one cell will be conserved to be taken forward to the another cell. And this conservation is done. That means conservation means preserving something for future use. As in ecology also we study conservation. Conservation is for protecting or preserving for future use. So that way the DNA molecule conserves itself
to be used in future generation, right, in the daughter cells. So with doping and other experiments, Michelson का experiment है, तो Michelson के experiment से ये पता लगा है कि yes, these molecules are really conserved. They are being, the DNA molecules found in the daughter cell or the progeny cells, the new daughter cells, is not something new. It has to come from something which is already pre-existing. This is cell theory also. It's one of the postulates of cell theory. It comes from the pre-existing cell. A new cell comes from the pre-existing cell. And the pre-existing cell contains the genetic material, the DNA, which is highly conserved. And that conserved property can be seen in daughter cells with half of the conserved content in them. And ये जो है half दिखता था, तो उसके हिसाब से इसको हम सेमी बोलना शुरू कर दिए, सेमी कंजर्वेटिव मोड। यानी कि डीएनए जब भी रेप्लिकेट होता है, हम अपने से दो बनाता है, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स होने के कारण वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर फॉलो करता है। अदरवाइज सम अदर प्रोपोर्शन से वो कंजर्व किया जाता है, शायद हाफ होता था, 1/3 होता था, या वट एवर। बट बिकॉज दे आर ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स, each strand goes into the new generation, and then the new strand will, sorry, the split up strands would create new strands against them with the complementation of attachment of nitrogen bases. So ये सब चीजें आपने पढ़ी है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। अब क्या है कि हम अभी आज के दिन हम एक ओवरव्यू लेंगे कि रेप्लिकेशन होता कैसे है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। और आई वुड लाइक यू ऑल टू go through the content, कहीं से भी, जहां से भी आप, you can search off or you can get any book or something। एक कोई बुक हो सकती है, कोई इंटरनेट पर साइट हो सकती है, कहीं स्टडी मटेरियल के रिपोजिटरीज हो सकती हैं। तो ये सब जगहों से आपको मैं कहूँगा कि आप लोग इस चीज को पढ़ें, एप्लीकेशन को, एंड दैट टू वी वुड कंसिडर ओनली प्रोकैरियोट्स टुडे। तो अब बात ऐसी है कि when will a cell get an indication or a message, now I have to replicate? डीएनए को रेप्लिकेट होना चाहिए, ये मैसेज सेल को कब मिलेगा? जब सेल डिवाइड होने वाला हो, जब सेल डिवीजन की तरफ बढ़ रहा हो, तो उसके पहले ही उसे मैसेज मिलता है कि I need to duplicate my nucleic content. So when the division is finished, so that I can give I can give my genetic material to the daughter cells. So ये जो indication है, that means DNA is duplicated when it is just nearby to enter the cell division. और ये चीजें हमने पढ़ी हैं हमारे सेल साइकिल के प्रोसेस में, है ना। जी फेज, एस फेज, एम फेज, सिंथेसिस फेज एम फेज से पहले आता है। सिंथेसिस फेज मतलब वहीं पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, आई मीन डीएनए डुप्लीकेट करता है, एंड देन एम फेज, दैट इज माइटोटिक और मेयोटिक फेज में एंटर करते हैं, डिवीजन वाला स्टेज। अब यहाँ तक जब तक डीएनए मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं किया था, लोगों को यही मालूम था कि जेनेटिक मटेरियल कुछ तो भी है जिसको हम यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन के नाम से जाने जाते थे, जो हाईली डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्टेन दे procure when they are identified. So न्यूक्लियस को जब स्टेन करते थे तो यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन के नाम से उनको दो डिफरेंट न्यूक्लिक मटेरियल को हमने नाम जरूर दिया था। पर लेकिन उन्होंने देखा कि when the same cell enters into cell division, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते थे, जिनको ना क्रोमोसोम्स बोलना शुरू किया। थ्रेड लाइक structures are chromosomes which are only visible when a cell is in its division state। इसलिए हमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो एक्स फॉर्म में नजर आता है। एक्स फॉर्म में जो दिखते हैं, इसका मतलब ही है नॉट द एक्स और वाई क्रोमोसोम, एनी क्रोमोसोम आपको दो स्ट्रैंड्स से दिखते हैं एक्स के फॉर्मेट में। दिस इज बिकॉज द क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी डुप्लीकेटेड। अदरवाइज एक क्रोमोसोम ऐसा ही रहता है, एक स्ट्रैंड, एक सेंट्रोमियर और एक दूसरा स्ट्रैंड, मतलब एक ही स्ट्रैंड जिसके बीच में एक सेंटर रहेगा और दो आर्म्स रहेंगे उसके, ये एक आर्म हो गया, ये एक आर्म हो गया, ARM, आर्म, हाथ, ठीक है।
तो हम पी आर्म क्यू आर्म ऐसे नाम देते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई, बिकॉज जब तक डीएनए मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, क्रोमोसोम को इतना ज्यादा स्टडी कर लिया गया था कि भाई वो हर चीज क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम पे कितने आर्म्स होते हैं, किस आर्म पे कौन सा जीन रहता है, कौन सा कैरेक्टर का कौन सा पोर्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि कौन सा जीन कहाँ पे है, कौन सा अलील कहाँ पे, अलील्स बोला करते थे पहले, तो कौन सा अलील कहाँ पे है, तो क्रोमोसोम के कौन से पोर्शन पे है, पी आर्म पे कि क्यू आर्म पे है, सेंट्रोमियर नजदीक है कि दूर है, इट्स इन बिटवीन या मिडिल पोर्शन में या फिर एक एंड की तरफ है, मतलब टीलोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है। तो ये सब चीज इतनी ज्यादा क्रोमोसोम्स को पढ़ लिया गया था। हाँ, उसके आर्म्स को भी वो फिर लोकस की बात करने के, सेंट्रोमियर से कितनी दूरी पे है, इवन दोज मेजरमेंट स्टडीज, even they were in, in trend in those days, until 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 and unless the DNA has been structured out, it's been modeled out by Watson and Crick. तो सोचिए कि बहुत समय से मालूम था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, but people were not able to उसको कैसे पढ़ना है, सिर्फ एक क्रोमोसोम्स नजर आया करते थे सेल डिविजन के स्टेट पे, तो उस समय ही वो क्रोमोसोम्स को पढ़ते थे। काफी सारी स्टडीज भी होने लगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ने लगे लोग, फिर लोगों ने बार बॉडीज देखी। बार बॉडीज यूजुअली एक्स क्रोमोसोम के कारण आता है, लेकिन एक से ज्यादा रहा तो ही आता है, एक पे नहीं आता। तो ये सब चीजें, इतनी सारी स्टडीज होने लगी थी क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, बिकॉज उसमें स्ट्रक्चर मालूम नहीं था कि क्रोमोसोम है क्या। इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी सीन ड्यूरिंग द डिवीजन फेज या सेल डिवीजन फेज में। अब सेल डिवीजन के डिवीजन में एंटर करने से पहले वाली फेज को जब बहुत डिटेल में समझा गया, समझ में आया कि वहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है यदि मान लो इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि एक सेल से जो दो सेल बन रहे हैं, एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो हम यूजुअली वो दे अंडरगो माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। उसके पास था उतना ही जेनेटिक मैटर उसके पास भी रहेगा। तो उसके लिए क्या करते थे, पहले मैटर को डुप्लीकेट करता था। तो जब तक पहले तो मालूम नहीं था डीएनए मॉलिक्यूल के, अब हमें डीएनए मॉलिक्यूल मालूम है, इसलिए हम बोलते थे कि डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होते थे और उनके नए स्ट्रैंड्स बन के वो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाया करते थे। सॉरी, और जिससे हमने वो मेसल्सन के एक्सपेरिमेंट से भी हमको समझ में आता है कि वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी कि हाफ ऑफ द स्ट्रैंड is been transferred to the new generation. अब ऐसे इस काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते चले गए, जब डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को मॉडल किया गया, तब people have started understanding more clearly. Okay, they have started understanding what locus is. They have started understanding what allele is. So that way, the understanding of the study which has already been done, it was more justified, more clarified with the modeling of DNA molecule. Okay, anyways, तो आज हम कुछ चीजें देखेंगे, ज्यादा नहीं, वो ये कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। हमें हर चीज दो चीजों में देखनी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हो सकता है कि आपके सिलेबस में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके नहीं दिया गया हो, तो इन दैट केस आपको मैं ये कहूंगा कि दोनों चीज जानिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी चीजों का डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में अब मैंने जैसे कहा कि जब सेल डिवीजन के पहले ही, हाँ, हाँ बोलो, टाइम हो गया। अच्छा, हाँ ठीक ठीक, एक सेकंड।